Hello guys, so welcome back to another weekly analysis of gold. So we are starting with a monthly time frame. अभी मंथली टाइम फ्रेम पे वी हैव ऑलरेडी गोट द क्लोजिंग. अब जो कल से जो सेशन स्टार्ट होगा मंडे से, दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ अ न्यू मंथ कैंडल. सो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूँ, द करंट ट्रेंड इज़ क्लियरली बेयरिश. आफ्टर दिस बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल द मार्केट इज़ गोइंग डाउनवर्ड ओनली. बट करंटली ऑन द मंथली टाइम फ्रेम इफ़ यू सी, यहाँ पर इन द मंथ ऑफ जून हमें एक बहुत अच्छा ड्रॉप देखने को मिला था. एंड जुलाई में अगर हम बात करें ना, इस कैंडल को देखकर पता चल रहा है दैट देयर इज़ अ डिमिनिशिंग बेयरिशनेस. सो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम द ट्रेंड इज स्टिल बेयरिश ओनली, बट there is a possibility that in the initial few days or maybe for a couple of weeks of the August month, market may try to like continue it with the uptrend. यहाँ पे we have got fair value gap as well, and यहाँ से हमें एक selling का move देखने को मिले towards the end of the month, and then we can see a candle something like this which will take it towards 3800 3600 levels. Only bullishness on the monthly time frame if you see this candle in green. So the month of August is very important for the like chart of gold. Monthly time frame पर अगर if we see this monthly closing in bullish, then only we can expect that the market is turning bullish. Otherwise it is completely bearish. But yes, swings will be on the both sides, so there is a possibility, because there is a diminishing bearishness here, so there is a possibility market may try to retrace a little, and then it will give you its real move towards the end of this month. So similar, if we look at the weekly time frame, अब वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है ना कि वीकली टाइम फ्रेम पे सी दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट हैव बिन टेकिंग सपोर्ट. इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स मार्केट एक ही जगह पर सपोर्ट क्रिएट कर रही है. एंड वाई आई एम सेइंग, सी अभी मार्केट इज स्टिल इन रेंज. अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर बात करेंगे तो मार्केट में अभी कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला है. मार्केट इज स्टिल इन रेंज. बट अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, this was the lower high, then lower low, and then again lower high, and this was the lower low. So market is currently standing at a lower low. अब यहाँ से there is a possibility that market will create a lower high, and then it will continue with its like real trend towards the downside. So weekly time frame पर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है हमें. Now if we look at the daily time frame, वहाँ पर you will get better levels to understand. अब daily time frame पर क्या है, देखो ये completely market एक range में stuck है. अगर मैं बात करूँ तो ये this was our supply area जहाँ से market rejected और market ने reject किया, and market कहाँ गई, हमारे इस order block पे जो हमारा एक demand area है. So market is currently stuck within this range only on the daily time frame. अब daily time frame पर एक चीज़ बहुत clear है, at any point of time, see currently the market is accumulating, so there is a possibility that market may show you manipulation first and then it will give you a proper distribution or displacement. So daily time frame पर एक चीज़ और मैंने observe करी थी कि market यहाँ पर we got equal highs, एंड जो ये हमारी थर्सडे की डेली कैंडल थी, इसने इन इक्वल हाइज को स्वीप किया एंड देन इट वेंट ऑल द वे डाउन. सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम देखो क्लियर जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ अबव और बिलो दिस एरिया ओनली. जैसे अगर डेली टाइम फ्रेम पे नाउ इफ़ वी सी ट्रेडिंग अबव दिस लेवल विच इज़ एट 4200 4220, देन नेक्स्ट एरिया विल बी डायरेक्टली टुवर्ड्स 4380 4400 एरियाज. अगर हमें 4200 4220 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती दिखती है तो, बट दैट इज़ अ बिगर पिक्चर. एंड सिमिलरली फॉर द डाउन साइड ओनली बेयरिशनेस विल बी बिलो दिस लेवल विच इज़ एट 3980. अगर 3980 के नीचे मार्केट जाती है तो 3960, एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3960 जाता है तो मार्केट विल
move towards 3880, 3850, 3800 very soon. But अब डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व करी है दैट आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी मार्केट यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है. सो अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट 4120, 4130 के ऊपर ट्रेड होना दिखता है, then also we can plan for buys and expect it to move towards 4140 and then 4180 areas. 4180, 4200 will be the next deciding factor कि किस तरीके से मार्केट हमें नेक्स्ट मूव दिखा सकती है. नाउ इफ वी लुक एट द 4 hour टाइम फ्रेम, सो ऑन द 4 hour टाइम फ्रेम market is in the range only, but on the 4 hour time frame if you see we have already got show here. उसके बाद से market is in this range, or we can say it is in this bullish flag as well, something like this. Also अभी 4 hour पर what is happening after giving the choch, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से एक सपोर्ट क्रिएट किया है ऑलरेडी, एंड आफ्टर स्वीपिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक मार्केट अगेन वेंट अप. अगर यहाँ पर हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता, इस एरिया को ब्रेक कर कर अगर चला जाता, तो डेफिनेटली ये यहीं से ही बुलिश हो जाता, बट इट फेल्ड टू क्लोज अबव दिस एरिया विच इज़ एट 4110, 4120. सो करंटली मार्केट इज स्टैंडिंग एट अ demand only on the 4 hour as well. So on the 4 hour only selling is below this level which is at 3990 areas. So if you see it trading below 3990, below 4000 levels, you can take a sell and expect it to move towards 3980, then 3960. 3960 and 3950 will be the only deciding like price for the gold price, like future किस तरीके से उसने ट्रेड करना है. Similarly on the upside only proper bullishness on the 4 hour is above this area only, which is at 4110, 4120. So 4110, 4120 के ऊपर we can expect 4150, 4140, 4150, 4180, 4200 areas. And now if we look at the 1 hour time frame, so on the 1 hour time frame सिचुएशन समवट सेम ही है, रेंज कर रही है मार्केट, बट ऑन द 1 hour टाइम फ्रेम हमें थोड़े से और लेवल्स क्लियर देखने को मिलते हैं. सी यहाँ पे आई विल शो यू मार्केट इज रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी 1-2 बार रिजेक्ट कर चुकी है. ठीक है, तो ओनली बुलिशनेस ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम इज above this level which is at 4120, 49, 4110 areas. If you see it trading above these areas, you can stick with the bias. And अभी अगर मैं बिल्कुल करंट प्राइस की बात करूं तो मार्केट इज एट दिस लेवल. So there are multiple resistance present on the hourly time frame for the gold. So if you see it trading above 4060 levels, current price is 4045, 4050. So if you see it trading above 4055, 4060 levels, you can take a buy and expect it to move towards 4080 and then 4100 levels. So ये एक trade we can plan, but we need a closing, like we need a market to sustain above 4050, 4060 levels. Similarly for the downside now, if you see it trading below 4020, then we can expect it to move towards 4000 and below levels. Any point of time if you see it trading below this area, which is again similar with the 4 hour time frame, which is at 4000 and 3990 levels. So if you see it trading below this area, you can stick with the sells and expect it to move to the lower levels. My personal bias is that there's a possibility that in the initial few sessions we may see gold hitting higher higher levels,
and then towards the end of the month we can see a proper bearish move again. 15 minute पे if I show you 15 minutes पे the current formation is this only, lower high, lower low, then lower high, then lower low. Currently market is standing at lower high, so any buying on the 15 minutes is above this area only, which is at 4060 levels. So if you see it trading above 4060, we'll get a new higher high, and then on the higher low, मतलब retracement का weekend weight, and we can plan our bias somewhere here, and then we can expect it to move towards the higher levels. So it is very clear, only buying confirmation is above 4050, 4060. Then next target will be 4080, 4100, and then 4140 levels. So इसी तरीके से I would want you guys to also trade. And if you guys like these videos, I would request you all to share it with your friends so that they can also get the same help. And if you like this video, do give it a thumbs up. I'll see you in the next video.